नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। बात करते हैं एलआईटी की। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, पीपल आर आस्किंग दैट मैम इफ आई एम हैविंग रिकरेंट फेलियर्स, कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये इम्यूनोलॉजी क्या हेल्प करेगा? सो वी जस्ट थॉट ऑफ हैविंग दिस सेशन विद वन ऑफ द नोन इम्यूनोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर मोहन राउत। आपने अब तक हमारी सीरीज देखी है जिसमें हमने इम्यूनोलॉजी और यूं कहिए कि लेड थेरेपी के बारे में बहुत बात की है, एंड दो सीरीज आर विद डॉक्टर मुग्धा राउत। सो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहन राउत एंड ही इज फ्रॉम मुंबई। बट आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी शहर में, कहीं भी, किसी भी सिटी में, we know that you can easily connect with Dr. Rauts. So, viewers, today's topic is struggling with infertility. Think about LIT. I never prefer to use this word infertility because I believe that each and every woman is fertile. मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में माँ बनने की इच्छा है, बट कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे रोक रही हैं. मे बी my system is not responding to the various medications or treatments I am taking. Maybe डेस्टिनी है, टाइम सही नहीं है. एंड यस, ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हेयर इज पॉसिबिलिटी हो सकती है मैंने कहीं डॉक्टर चूज करने में तो नहीं गलती कर दी. सो इफ यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ दीज इश्यूज, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ट्रीटमेंट कहाँ रुका है, एंड एक इनफर्टिलिटी का टैग लगता चला जा रहा है. सो प्लीज डू कनेक्ट विद फर्टिलिटी दोस्त, बिकॉज एज योर दोस्त वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. Doctor connection, right line of treatment. Even we have very good in-house programs. सब लोग बोलते हैं उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि हम आपका ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, वेदर इट्स नेचुरल कंसेप्शन, आईवीएफ, आईयूआई, और इवन कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा. So viewers, let's start with the session. We have very known immunologist with us today, Dr. Mohan Raut. उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट यस, वील गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ही इज अ डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी मुंबई. बट आप सब अगर कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, यस, दुनिया के कोने में इसलिए बिकॉज वी हैव मेनी एनआरआई मेंबर्स आल्सो जिन्होंने डॉक्टर राउत से कंसल्ट किया है, एंड दे जस्ट मूव अहेड इन देयर फर्टिलिटी जर्नी. सो आज हम उनको बुला रहे हैं एंड हम डिस्कस करेंगे एलआईटी के बारे में. सो व्यूअर्स, प्लीज कोई भी आपके क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हैं बताइए. और अगर आपको लगता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप डिस्कस नहीं करना चाहते, देन ऑल्सो डोंट वरी, प्लीज डू सेंड अस योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन आवर स्क्रीन, और मैं जरूर आपके सवाल पूछूंगी. सो लेट्स कॉल आवर गेस्ट ऑन द स्क्रीन. नमस्कार डॉक्टर मोहन, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त. Namaskar. Thank you so much, Purnima ji, for inviting me in this live platform with Fertility Dost, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बातें करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं या समझो कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं. And I look forward to this program. So thank you again. Let us start. I think before we start, let me just tell you, I am a practicing gynecologist for last almost 34 years and with special interest in the reproductive immunology field. And me and my wife, we are clinical reproductive immunologists, the only two certified clinical reproductive immunologists by the American Society who are there in India. So let us begin. आज शुरुआत करते हैं पूर्णिमा जी. Without wasting much time. यस, सो व्यूअर्स, जैसे डॉक्टर मोहन ने बोला कि ये इंडिया के वन एंड ओनली अलोन कपल हैं जो आपके इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज से डील करेंगे और आपको समझाएंगे कि सच में क्या इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, और अगर हो रही है रिकरिंग फेलियर्स क्यों हैं, अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं. वी कैन जस्ट फाइंड आउट दिस
थिंग्स। एंड वन मोर थिंग हियर व्यूअर्स, अगर आपको लगता है फेसबुक पे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज, या यू आर नॉट ऑन फेसबुक, सो डोंट वरी। हमारा ये सेशन हमारे इंस्टा पे भी लाइव है और हमारे यूट्यूब पे भी लाइव है। सो प्लीज डोंट वरी, आप किसी भी सोशल मीडिया पे देखिए, और अगर कुछ मिस हो जाता है, सो दिस रिकॉर्डिंग विल रिमेन ऑन आवर सोशल मीडिया फॉर एवर। जब तक फर्टिलिटी दोस्त है, रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी। सो सर, सबसे पहले बेसिक सा सवाल लोग पूछते हैं कि एलआईटी ही क्यों? बहुत बहुत सारी चीजें हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला ये टेस्ट करवा लीजिए, ये नॉर्मल आए, स्कैनिंग हो गई, स्कैनिंग इज ऑल्सो नॉर्मल। बट अब अगर आगे बढ़ना है तो एट टाइम्स डॉक्टर्स ऑल्सो सजेस्ट कि लेट्स सीक एन एडवाइस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर। सो why this LIT is important when we are dealing in recurrent failures or unexplained cases? Very good question. Actually, to understand this, we'll have to go into little bit into the physiology of pregnancy और pregnancy normally कैसे ठहरती है, कैसे उसे support मिलता है माँ की शरीर में. So what happens is, you all of you know what is required for normal pregnancy. It requires good sperm, good ovum or egg, और फिर और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसे कि यूट्रस ट्यूब्स. अगर ये सब सही है तो प्रेगनेंसी ठहरती है. लेकिन इसमें एक सिस्टम ऐसी है कि जो बैक एंड में काम करती है, वी कैन से, विच इज एक्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, एंड दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और आई वुड से क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी. और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वी फेस प्रॉब्लम्स लाइक मिसकैरेजेस, infertility, which leads to IVF failures and so on. So इसके लिए briefly मैं बताता हूँ कि why immunology we should consider. So after that we will get to know why then immunological treatment is required. See, all of you know that our body is has a protective system called immune system, and it is important for all body functions, and equally it is important for reproductive function. Now here our body doesn't accept anything that is foreign to our body. If anything that is foreign to our body comes in our body immediately builds an immunological reaction against it so that it is destroyed or it is rejected so that we are protected. फिर जिसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ हार्मफुल केमिकल हो, our body doesn't accept. So ऑन दिस बैकग्राउंड अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसी है? 50% फ्रॉम मदर, 50% फ्रॉम फादर. नाउ द पार्ट विच कम्स फ्रॉम फादर is totally foreign to mother's body, right? So the pregnancy is different from mother's body. फिर लॉजिकली सोचा जाए तो सभी प्रेगनेंसियों के खिलाफ भी रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हैज अ स्पेशल इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन इन मदर्स बॉडी. इसीलिए बिकॉज ऑफ विच, in spite of being different, it grows without any problem. So agar for this you require normal immune system. Lekin in some cases this natural protection doesn't function properly. This natural protection is through certain protective antibodies and protective cells. और अगर वो सही तरीके से काम ना करे, या तो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं है, उनकी लेवल कम है, या प्रोटेक्टिव सेल्स कम है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है उसके खिलाफ रिएक्शन होने लगती है जैसे कि किसी फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ हो, और प्रेगनेंसी की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. और अगर प्रेगनेंसी के जिस टाइम पे ये ग्रोथ ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, हमें अलग अलग प्रॉब्लम दिखाई देते हैं. थोड़ी लेट हो गई रिएक्शन तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और मिसकैरेजेस होते हैं, और बहुत जल्दी हो गई तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, इम्प्लांट ही नहीं होता है, और इनफर्टिलिटी होती है या आईवीएफ फेलियर होता है. तो फिर इस प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम का हम पता लगाएंगे और अगर उसका इलाज करेंगे तो डेफिनेटली इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम ट्रीट हो सकता है. और उसके लिए एक जो ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम हमारा 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, इम्यूनाइजेशन थेरेपी और एलआईटी. तो इसीलिए पूर्णिमा जी का जो क्वेश्चन है कि एलआईटी क्यों रिकमेंड करते हैं, तो इसके पीछे ये साइंस है. और फिर किन कौन से केस में करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे, कौन से केसेस में उसका फायदा है. लेकिन this is how we look at lymphocyte immunization therapy as a possible solution
for those couples who have either unexplained repeated miscarriages, मतलब बहुत सारे केस में कारण ही नहीं पता चलता है, unexplained IVF failures, उनमें LIT रिकमेंड होती है. आई थिंक पूर्णिमा जी आपका आंसर मिल गया शायद कि LIT ही क्यों. Yes, sir. So we have one query over here. I think बहुत common question है जब हम male factor से deal करते हैं. Sir, I have sperm DFI as 34%. Is it treatable? ओके सो जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा है तो दैट इज रिलेटेड टू द मेल सिस्टम एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द मेल और हस्बैंड के साइड से ओनली वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज दिस स्पर्म. अगर स्पर्म काउंट इज गुड, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, उनका फंक्शन अच्छा है, तो यूजुअली फ्रॉम द जॉब ऑफ द हस्बैंड इज डन अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर रिलेशंस. सो there is something called as DNA fragmentation. So this is a change in the DNA of the sperm because of the oxidative stress. जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपने बॉडी में होता है, जो ऑक्सीडेट फ्री रेडिकल्स जो अपने बॉडी में तैयार होते हैं, उसका असर स्पर्म्स पे भी होता है. और अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, जैसे कि अगर हस्बैंड जो मैन इज स्मोकिंग या सर्टन अदर डिसीजेस है जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, जिससे कि डीएनए उसका डीएनए पे असर होता है एंड द डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंक्रीजेस. सो देर इज अ नॉर्मल लेवल कि 25% तक अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है तो दैट इज फाइन, बट उससे भी ज्यादा है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड इन दैट केसेस ऐसे नहीं कि ट्रीटमेंट उसको नहीं है, we can treat it with certain antioxidants and these medicines are very effective. Of course smoking या अदर जो हैबिट्स है जिससे कंट्रीब्यूट टू दिस वो बंद करनी है, और ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन अगर लेते हैं डेफिनेटली डीएफआई कैन कम टू नॉर्मल एंड इट डेफिनेटली हेल्प. बट अगर वो ज्यादा है तो इट डज प्ले अ रोल इन कंसेप्शन और समटाइम्स इवन मिसकैरेजेस. एंड सर, जैसे आपने बोला कि मेल फैक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो वी हैव वन मोर क्वेरी रिलेटेड टू दिस दैट सर जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Just give me a second. क्योंकि मेल फैक्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ इनफर्टिलिटी जो है वो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द मेल फैक्टर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर जैसे आपने बताया कि मेल फैक्टर के लिए भी उतना ही कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है जितना फीमेल के लिए है. सो वी हैव वन मोर क्वेरी रिलेटेड टू दिस. I think we have one question coming over here. Just give me a second. Yes. So very interestingly, one person is asking that what is the ideal age for seeking LIT? LIP. अच्छा. So I will ask one question. What is the ideal age to have a baby? So Right. it's like uh, for a woman when she comes becomes adult, you can say, मतलब ovulation process शुरू होती है. So nature, if you go by physiology, she can become mother after that. जैसे जब तक ओव्यूलेशन होते रहता है तब तक देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी. सो Right. वैसे ही अगर जिस एज तक प्रेगनेंसी पॉसिबल है उस एज तक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कंसीव होने में, और उसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है और एलआईटी की जरूरत पड़ सकती है. सो देर इज नो पर्टिकुलर एज आई वुड से कि एलआईटी इज रिकमेंडेड. अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है, इवन इफ से द पेशेंट इज 45 years old एंड शी इज ट्राइंग टू कंसीव, और विच एवर वेज डोनर है कुछ भी कंसीव हो रही है, बट if there is immunological problem then she will be benefited by LIT. So in the age pregnancy is possible, LIT may be required and if the investigations indicates. I think But is that clear? yes, but sir जैसे यूजुअली जब हम आईवीएफ या इन ट्रीटमेंट्स में जाते हैं, सो आज की डेट में बहुत कॉमन है कि फीमेल
मस्ट हैव क्रॉस देयर 35, एंड एक टेंशन, एक प्रेशर बिल्डअप होना लग जाता है. सो इज इट पॉसिबल कि व्हेन वी आर अंडरगोइंग दीज नॉर्मल टेस्ट, जस्ट लाइक प्री नेटल टेस्ट, एएमएच चेक किया हमने, अपना एफएसएच देखा, थायराइड देखा, तो क्या हम उसके साथ साथ अपने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं, और वी रियली नीड टू वेट for like few months or a year that yes, if I am getting pregnant or not? कैसे है देखो कि प्रेगनेंसी ना ठहरने के जो बहुत सारे कारण हैं, या तो मिसकैरेज से आईवीएफ फेलियर के जो सब कारण है, वो कभी एक साथ भी हो सकते हैं. ऐसे नहीं कि एक ही कारण है और उसको ट्रीट करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. सो स्पेशली अगर ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट थोड़ी लेट शुरू हो रही है, तो सभी पॉसिबल कारणों का तपास या इन्वेस्टिगेशंस एक साथ करें तो और अच्छा है. सो जो नोन कॉजेस है उसके लिए जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके साथ में अगर हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के टेस्ट करें, तो हमें इस कारण का पता जल्दी चल सकता है. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 8-8, 10-10 साल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है, आईवीएफ करते हैं, 4-5 साइकिल्स होते हैं आईवीएफ के, फेल हो जाते हैं. फिर किसी को लगता है कि अरे फिर इम्यूनोलॉजिकल कारण हो सकता है, फिर टेस्ट होते हैं और फिर पता चलता है कि अरे इस केस में तो इम्यूनोलॉजिकल कारण है, उसे एलआईटी की जरूरत है, उसे एलआईटी बेनिफिशियल है, और एक्चुअली उस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कंसीव भी हो जाती है. तो तभी ये लगता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशंस पहले होते थे, तो डेफिनेटली वी वुड हैव सेव्ड लॉट ऑफ ट्रबल ऑफ गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रीटमेंट और सो मच ऑफ स्ट्रेस, physical, mental, everything can be avoided. So what you're saying is right. If these investigations are done early, or if they become a part of all investigations, especially in those cases जिनमें फेलियर दिखाई दे रहा है कि फेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तुरंत इन्वेस्टिगेशंस होने बहुत जरूरी है. सो सर, यहाँ पे एक मैसेज है, आई रियली वांट टू शेयर. सो इन्होंने आपसे एलआईटी करवाया है. सो थैंक यू सो मच सुमन जी, आपने ये हमें बताया. इट रियली गिव्स मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस टू पीपल हु आर जस्ट वाचिंग दिस सेशन. आपने करवाया और आपको सक्सेस मिला. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पॉजिटिव फीडबैक विद अस. So sir, let me share one more query. I think Facebook पे थोड़ा कुछ इशू आ रहा है. So I'm just informing each and every viewer, आप प्लीज अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू हमें पूछ सकते हैं. फेसबुक के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, so please share your queries through YouTube and Insta. I'm happy to take each and every question for you. So, sir, this is query: is LIT beneficial to the patient suffering from APLA and SLE diseases? ये बहुत questions आते हैं. I think it's really important to just take it. Okay, first thing is the question includes two diseases. One is the APLA, that is anti-phospholipid antibody syndrome, और दूसरा SLE disease. ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है. आपको पता है व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज? इन दिस देयर आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट आवर ओन एंटीजेंस. So these diseases are known to affect the reproductive system. Because of say APLA syndrome, there are increased chances of pregnancy losses like miscarriages or even late pregnancy losses. SLE is a serious autoimmune disorder which affects also kidneys, and it has impact on reproductive system causing miscarriages. So in these cases, the problem is antibodies against our own body. While the lymphocyte immunization therapy is a treatment which is useful for couples who have what is called as an alloimmune problem. Alloimmune problems pertains to the protection of pregnancy in the mother's body. And जैसे मैंने बताया अभी कि नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज और प्रोटेक्टिव सेल्स से होता है, और अगर वो नहीं रहेंगे तो मिसकैरेजेस से आईवीएफ फेलियर्स होते हैं. और इन दैट केस हम एलआईटी ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स तैयार होते हैं और प्रेगनेंसी का प्रोटेक्शन होता है. सो फॉर अपला एंड एसएलई द ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज इटसेल्फ. मतलब फॉर अपला सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लड, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी का ब्लड फ्लो सफर होता है, एंड देयर आर मिसकैरेजेस और प्रेगनेंसी लॉसेस.
SLE may be there is it affects the blood vessels, causes vasculitis, and therefore blood flow suffers, and there is pregnancy loss. So they have specific treatment, and LIT treatment is not the solution for those cases. That is clear. But there is one thing here I would like to share, that these autoimmune disorders are usually associated with alloimmune problem. So they go hand in hand. So whenever there is SLE or APLA syndrome, we'll have to investigate for the alloimmune problem the way we do it before LIT procedure. And if that is the problem, then both have to be treated simultaneously. Only then we will get success. If we treat just APLA and SLE, still patient may miscarry, or if we just treat the alloimmune problem and don't treat APLA and SLE, still it will not work. So the answer to this question is LIT is not a solution directly for this problem, but the alloimmune problem which is corrected by LIT is commonly seen with these disorders, and therefore the treatment goes hand in hand. राइट एंड वृशाली इफ यू थिंक कि आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, यू नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर राउत, प्लीज लेट अस नो. हमारा ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं. आप बताइए क्या इश्यूज हैं क्या नहीं, और जस्ट सेंड अस अ सिंपल मैसेज, और यू कैन जस्ट राइट हियर इन अ कमेंट बॉक्स. माय टीम विल कनेक्ट विद यू एंड वील डेफिनेटली सीक कि आपको क्या हेल्प हम दे सकते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. So sir, I have one more query. Let's take up. I'm just taking the another query. So after 3 failed IVF at the age of 39, should I consider LIT? आई थिंक जब हम एडवांस स्टेज पे पहुंचते चले जाते हैं, फेलियर्स होते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ कहीं से हो जाए और पॉजिटिव प्रेगनेंसी आए. तो सर, व्हाट यू सजेस्ट एट दिस स्टेज? Now we are coming to these specific questions related to lymphocyte immunization therapy. Before I just start with the answer, just want to tell you one important thing, that lymphocyte immunization therapy is a general term. It's an immunological treatment that is useful in these patients who have immunological problem. There is one specialty of our centers, that is we provide do this treatment in a particular specific way, which is a patented and a branded process, which is called as Immulit or ImmuLIT. So the our experiences or our whatever recommendations, what we will be sharing here are through our experiences with this special process of ImmuLIT. So coming to this question, yes, now uh, Karishma has said that there are 3 failed IVFs. Now, when for IVF to succeed, we require only 3 important things: one egg, good embryo, good cavity, and good lining. If these 3 things are fine, IVF should succeed. But in spite of that, the success rate of IVF is limited. Is now take home baby rate, they say maybe for 50%, or in some cases maybe around 50%. So still significant number of couples fail, and therefore in these cases it is highly likely that the problem is immunological, and if we find that out by doing immunological tests, then definitely immunological treatment will be helpful. So in this case it is important to consider the immuLIT treatment. Of course, not just because there are 3 IVF failures. If the investigations that we do indicate, I think I will elaborate on this. There are 3 important investigations which we do. One is called as lymphocyte cross match, which is a test between husband and wife's blood to detect whether the protective antibodies are present or not. If they are already present, it is positive. If they are not there, it is negative. And then LIT will be beneficial. Then natural killer cells in the peripheral blood for their change. And third is an inflammatory chemical or cytokine TNF alpha. So if that is also raised, cross match is negative, changes in NK cells, then they indicate that in that case, LIT treatment or immune lit treatment will be beneficial. And then we give this treatment. So definitely it is worthwhile considering a lymphocyte immunization therapy or immunity treatment in your case if the investigations indicate. So again, I would suggest that every case is not recommended for LIT. As sir just mentioned, we really need a scientific medical approach before following or before doing any kind of medical procedure. So अगर किसी ने आपसे कहा कि नहीं,
आपको एलआईटी लगेगा, आपको एलआईटी करना है, सो प्लीज चूज अ राइट डॉक्टर हु कैन गाइड यू। और उसके लिए डॉक्टर राउत आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप बताइए, हम आपको कनेक्ट करवाएंगे। सो डॉक्टर, इंटरेस्टिंगली हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। जैसे हमने बोला कि राइट डॉक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर undergoing this IVF treatment, and I think right doctor is really important when you really want to take LIT treatment. So I'll just highlight one more query: how to select the correct doctor for LIT, because many clinics are suggesting immunotherapy with their doctors. I think this is really important, sir. We need to address this on this live session and, of course, on this platform. So the fact that immunology plays an important role in pregnancy loss is absolutely clear. Okay, so therefore it requires immunological treatment. Now, the treatment of lymphocyte immunization therapy is helpful in couples who have this type of immunological problem. Now, the question is, where should one do the treatment, or what is the right, with whom or with which center? So the answer to this is similar to when we do IVF, where we do, for example, IVF, we select that center. We see that the doctor is qualified to do IVF, the doctor has maximum experience, the doctor has the right way of doing, the success is really good, and we don't go by just because it is there nearby, or it is just because it is recommended. So therefore, if you ask us, so we are in this field for more than 30 years. We have been doing LIT for those many years. The important part here is the two important things I would like to tell. One is the person or the doctor who has been doing it. So the qualified person doing this makes a difference. Someone who is a clinical reproductive immunologist who has the scientific base in this subject will be an important person with whom you should do. Second is the success rate. So if the success rate that is provided by a particular center is really good, then that is another factor, because now we get so many patients who say ki we now have been told to get this treatment done or lymphocyte immunization therapy done at this center or that center. Yes, this is very important. It's a good thing that people are aware that immunological treatment is required. But finally, to get, because people feel that this is a simple treatment, just separate lymphocytes and inject it and it will happen. But that is not so, because when we talk to many of our senior colleagues, they say we have done this for 2 3 years, we tried, it didn't happen, we are not doing it. So what happened to those patients who have undergone treatment with them? So I think it is important for everyone to take an informed decision, but it is really good thing that they are thinking about immunological treatment. And I'm sure that a patient is wise enough. See, everyone is wise enough to know from where to do and to where there are best results. Now, many times patient asks us or other, okay, why we should do with you? So then it becomes very difficult to tell about ourselves. But then we, as I said, not only we have been working in this field for a long time, but we have our work presented in the international conferences, journals. We have written a book on this subject. This is the only international book which is written. So I feel that everyone should make an informed decision where to do this treatment, and everyone wishes, everyone who treats you with this treatment, everyone wants you to succeed. It's not that just everyone or anyone wants to do a treatment for the sake of it, but people do it in different ways. So the ideal way of, there is an international accepted way of doing this treatment. I have seen patients where they have given this treatment, where they have given injections on the entire arm, and which is not the right thing to do, or the proper precautions are not taken. In Philippines, there was a big case where this treatment was given by when it started was given by different people, not even qualified people, and patients landed up with abscesses on the
below the skin because of improper treatment. So therefore, it is very important to select the right place, right doctor, and I'm sure this treatment will be beneficial in your case if it is required, indicated by the uh, investigations. So I think it should be clear for whom to do it. But I Yes. am really happy that you are thinking about immunological treatment, which is a very important part of treatment, and majority of the unexplained miscarriages, IVF failures will have this basis, underlying basis, and they will have good chances of success with this treatment. Right. Here I would suggest one more thing to our viewers. हम हर चीज के लिए गूगल करते हैं, so why not to check the credentials of your doctor on Google, and Dr. Rauts are very active on LinkedIn also. उनके बहुत अच्छे वीडियोस वहाँ पे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं. You just check their LinkedIn account also. आपको लगेगा कि हाँ सच में ट्रीटमेंट लेके देखना चाहिए, सक्सेस जरूर होगा. So we have next query, sir. This is from our Instagram. Should I take LIT when pregnant? Very important question. Now, again, I am telling LIT is given if it is required, if it is indicated by doing the tests. Now, LIT is required for couples who have unexplained miscarriages, unexplained infertility. So, if a couple who has unexplained miscarriages presents or comes with already pregnancy, with the couple, wife is already pregnant, they have history of miscarriages, then in that case the couple will require, and the investigations are indicating that couple will require a lymphocyte immunization therapy or immune treatment, and they will be benefited. So immune treatment can be given during pregnancy also. So as early as possible during pregnancy we give this treatment, and after that the post immunite we give a protocol of immunomodulatory medicines. Here I would like to stress one more thing. The way we do it is it's a one time process. As I already mentioned, it's a patented and a branded process, but it's done one time only, even when done during pregnancy, and it is beneficial in that case. We have so many patients who have been treated during early pregnancy, and certain patients even in second or third month of pregnancy who had history of pregnancy losses later on because of immunological reasons. So yes, and the studies, international studies have also shown that it is absolutely safe during pregnancy also. Right. And in case आप pregnant हैं तो घबराइए नहीं, and you have these fear factor inside you कि what next, कहीं pregnancy loss ना हो जाए, because you are having this history of miscarriages, then also देर नहीं हुई है, आप connect कर सकते हैं, and as sir mentioned, it is safe. And here I would really suggest our viewers के please आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा के देखिएगा. You never know what click. So thank you from asking. So viewers, please you can ask your queries through Instagram also. आप YouTube पे भी करिए. Facebook के साथ कुछ issues चल रहे हैं. We don't know why it is not responding. So sir, there's one more query related to this IUI and IVF. I think ये बहुत common है. हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने IUI करवाएं और कब IVF पे शिफ्ट हों. कितनी बार डॉक्टर आईवीएफ बोलते हैं, हम घबरा जाते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक और आईयूआई कर लेते हैं. एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन फीमेल जिसने 12 आईयूआई करे, और मुझे लगा अरे क्यों किए. सो क्या ऐसा मार्कर है, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हम आईयूआई से आईवीएफ पे शिफ्ट कर जाएं? एंड आई नो डॉक्टर्स बेस्ट सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, बट we as a person, we think in एक IUI or say it's easy process. So sir, what you suggest and your golden pointers on this question, because this is a very commonly asked query. Absolutely, we come across also. You told me your experience. Yesterday, I saw a patient who had undergone 15 IUIs. She had not never conceived. Then IVF, that also she didn't conceive. See, basically, IUI is one step ahead of natural conception because, but the basic difference is we just uh,
introduce sperms directly inside uterus. Rest of the procedures, the ovulation, the going of egg going into the tube, fertilization, everything is occurring naturally. So there are certain indications only where IUI is indicated, and also the number. It is generally said that 3 to 6 IUI cycles are should, if that is required, then by that time the couple should conceive. So and this also varies. Why 3 to 6? There might be a couple who has everything normal. You have done 3 IUI cycles where they have gone excellent, ovulation is proper, and sperm, the procedure has also gone well. And if the couple doesn't conceive, or the couple is little elderly where we don't want to waste more time, in these cases even 3 cycles are enough. But after 6 cycles, if there is no success, there is absolutely no point in continuing with IUI. Yes, it is of course important to ensure that the tubes are open, everything else is normal before advising IUI. I have seen certain couples where the tubes have not been tested and Right. IUI has been done, and then later on it turns out that the tubes are blocked and the IUI was a waste. So therefore, and the IUI has to be proper. There is something called as super ovulation with IUI, means use of certain ovulation inducing tablets and injections for proper ovulation, ensuring good ovulation, and then IUI. And the chances of success with super ovulation and IUI are really good. But if that also doesn't succeed, then yes, we have to think about higher treatment. And here, one more thing I would like to say, that even after IUI failures, before directly going to IVF, we must check for immunological factor. We have so many patients who have done have IUI failures. We have investigated them, and they have immunological factor, and we have treated them. They have done well. So this is especially pinching because when we see couples who have IUI failures, they undergo IVF failures, and after giving immunological treatment, they conceive just naturally. I had one patient, I think, who had 5 IVF failures, never conceived, and after LIT, she just conceived naturally. And there are so many like this. So, therefore, it is important to keep immunological factor in mind and use immune treatment wisely before the couple goes through the multiple failures after even IUI failures. So again, really important factor, please कंसल्ट योर डॉक्टर, आप डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, इतने सारे आईयूआई की शायद ज़रूरत नहीं है। एंड सर आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, बिकॉज़ वी हैव सीन सच केसेस जहाँ पे ट्यूब्स ही नहीं चेक होती एंड आईयूआई करते चले जाते हैं। कहीं न कहीं ये अवेयरनेस बहुत कम है। गाइज़ प्लीज़ मेक श्योर टू गेट प्रॉपर डिस्कशन विद योर डॉक्टर। डॉक्टर के साथ हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट दैट we are challenging our doctor, it's just that we are just communicating because it's a great process, lengthy process है। एंड जो भी इस फर्टिलिटी की जर्नी में आता है, उसके इश्यूज, उसका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सब कुछ बढ़ता चला जाता है, बिकॉज वी हैव सोसाइटी ओवर देयर जो कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है। और कई बार तो हम खुद से सोचने लगते हैं कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं। कम आउट फ्रॉम दोज प्रेशर्स एंड जस्ट टॉक विद योर डॉक्टर। और अगर डॉक्टर से नहीं बात हो पा रही तो हम आपके साथ हैं, आपके दोस्त, हमसे बात कीजिए। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हम लेते हैं। इज दिस गारंटेड थेरेपी फॉर कंसेप्शन? So, what is guaranteed treatment? I think we will have to talk about that. The first important thing is there is nothing guaranteed, or God only will know if it is 100%. So nothing is 100% in medicine. But yes, medicine is a science. So if we go scientifically, find out the cause, rule out other causes, treat other causes, then the chances of success are highest, maximum. So therefore, immune treatment is a good treatment for couples who require it. So therefore, selection is also important. If you select the right couples who require it by doing investigations, then do the treatment in the right way at right place, and followed up by proper medications, immunomodulatory medications. Then there are very good chances. In our center, we have almost close to 80% success rate for those couples who have been selected with this test and have been treated. So therefore,
it's a guarantee is a very vague word. No one can give guarantee, but yes, we always wish that all patients, each patient conceives. So that is our wish. But yes, if we scientifically work on this problem, definitely the chances can be good. And the other thing is, expressing success as percentage has no meaning on one-on-one basis. Suppose a couple is sitting in front of me. If I tell them your chances of success are 80%, the next question couple can ask me is, will we be in 80% or 20%? So 20%. can I tell you, the success of IVF is 50%. So there, for each couple, the chances may be different. When we say success of IVF is 50%, there are couples who may have just 5% chance because their systems are not, there are a lot of problems, but there might be some couples who have 90% chance of success. So therefore, it is unfair to tell a couple that your chances are 50% when it is less, or they are more. So therefore, this percentage doesn't work on one-on-one basis. So on one basis, we need to tell the patient what are chances in your case. If your systems are fine or everything is okay, there are no other problems, definitely your chances are good. So therefore, this is the way I right at this problem, I feel. राइट, सो गारंटी कोई नहीं दे सकता, यकीन मानिए। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई भी नहीं आपको गारंटी दे सकता, बट वी बिलीव दैट प्लीज गिव योर 100%, बिकॉज आपके डॉक्टर भी अपना 100% दे रहे हैं आपके ट्रीटमेंट में, एंड वी रियली विश कि भगवान गारंटी देते तो अच्छा है। सो अगर कुछ भी आपको इश्यूज, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट अस नो, और यू कैन आस्क योर डायरेक्ट क्वेरी ऑन आवर इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। हम अभी भी लाइव हैं, कुछ देर और हम लाइव रहेंगे। अगर कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके छोड़ दीजिए। वील मेक श्योर दैट यू विल गेट आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। So, sir, we have this query from Instagram. I am dealing with thin endometrium lining issue for last 3 months. Lining goes to 6 to 7 mm. Is LITB beneficial for me? See, thin endometrium is an important cause of failure of infertility or failure of IVF. So there are many causes for thin endometrium. Commonest being infection, in our country, tuberculosis. So if there is damage to the underlying cells which regenerate, then there is very treatment is very difficult. So the immunological treatment of Immulate is not a direct solution for thin endometrium, and uh, it's not that if you take Immulate, the lining will increase. But at the same time, I would like to share our experiences. We have seen certain couples with unexplained thin endometrium. Everything is normal. There was no history of tuberculosis, no history of surgeries. So, but the endometrium is thin and not responding to hormonal treatment. And these patients were given lymphocyte therapy or Immulate from the point of view of failure, IVF failures. And these couples surprisingly showed increase in their thickness. And we have now a series of more than 10 patients who have responded well after LIT, and 50% of them have even conceived. So therefore, LIT or Immulate is not the treatment for thin endometrium, but there are patients we have seen who have been benefited. Still, the number is less. So we are waiting for more patients to respond, and then we can present it, our experiences to other doctors. So yes, again, this is not the treatment for thin endometrium, but it is worthwhile. Uh, yes, so we just had comment from the person who has taken treatment from sir, and she mentioned that 5 लोगों ने एक साथ LIT ट्रीटमेंट लिया था और उन सबका पॉजिटिव आया। यस, वी हैव दिस। सो मेरे IVF सेंटर में सर से 5 पेशेंट ने LIT करवाई, सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर शेयरिंग दिस पॉजिटिव फीडबैक। कहते हैं ना, डूबते को किनारा, डूबते को तिनके का सहारा बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक छोटा-सा एक लाइनर कमेंट लिखा, यकीन मानिए हज़ारों, हज़ारों व्यूअर्स को ये हेल्प करेगा, एक उम्मीद देगा कि वो किसी न किसी तरीके से एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी रियली एप्रिशिएट यू पोस्टिंग दिस कमेंट ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।
So, sir, we have next query. How much blood from husband is taken for LIT? एक्चुअली वो क्वेश्चन क्यों पूछा मुझे पता नहीं है, बट दी दिस इज अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. So we require certain amount of cells, number of cells for this procedure. So therefore the blood required from each person is different, and so it's individualized. Also it is a part of our patented protocol, so it will be difficult for me to share with you for this purpose. But if there is any specific reason why you would like to know, you can contact me directly, or I think we will tell you in a particular case what is required. But the details are it will be difficult for me to share. राइट. पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, पर्सनलाइज्ड सवाल है, सो प्लीज आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें मैसेज कीजिए. वील डेफिनेटली कनेक्ट यू डायरेक्टली विद सर. So, sir, next we have can I get pregnant? I'll be 45. Advanced age pregnancy में actually she is asking कि LIT कितना help करेगा? So again, at the age of 45, the biggest challenge is the ovarian function. Okay, so agar age nahi hai, so we have solution of donor egg. Okay, if the uterus is fine, general condition of the patient is fine, there is always a possibility that at 45 also there will be pregnancy. So if there is a possibility of pregnancy, there is always a chance that there can be immunological problem. So again, if the immunological test will indicate, then even at 45, if we take care of all the other essential factors like egg, the egg, the right type of treatment at right place, then lymphocyte immunization therapy or immune treatment can become can be helpful if the test indicate in a particular case. So why not? Till the time the couple can conceive, that is, or in our country 50 is the age up to which IVF can be done. So till that age, if there is immunological problem associated, it can be treated by immune treatment and it will be beneficial. और सर अब तो IVF की एज पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं आफ्टर दिस recent वो. So I think please reconsider your age. It's not about getting pregnant. It's about giving life to a healthy child, and it's about just enjoying the each and every moment of growing of your child. So sir, we have next query related. LIT can be taken after transfer. Possibility है क्या कि ट्रांसफर कराने के बाद पेशेंट आपसे मिले और पूछे कि LIT ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यस LIT ले सकते हैं, सो क्या पॉसिबिलिटीज है सक्सेस की प्रेगनेंसी की? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं. Again, if the couple has a problem, immunological problem, and if the investigations indicate that couple will be benefited by the immune treatment, then we can give it even after transfer. I just told you that even we give in early pregnancy, if the couple is already pregnant, also we can give LIT treatment in the early pregnancy or sometimes in the later part of pregnancy also, and it is equally effective. So therefore, ideally, if we have time to give immune procedure and then plan pregnancy or transfer after 4 weeks. But if the couple comes to know about this treatment little later, transfer has already been done, still immune treatment can be given because the effect starts immediately. And if the couple requires it, they will be benefited by the treatment. So yes, after transfer also it can be taken. बट अगेन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द डॉक्टर हु इज परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर और हु इज सजेस्टिंग यू फॉर द टेस्ट, बिकॉज इट इज रियली इम्पोर्टेंट. ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से करवा रहे हैं, कि और डॉक्टर के सजेशंस क्या हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट डॉक्टर्स आर डूइंग इट अनएथिकली और अच्छे से नहीं कर रहे, बट बिलीव मी अगर आप इतने ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं तो एक चेक रीचेक करना तो बनता है. So sir, we have this query from one of our NRI member. So she is asking, is it possible for me to do these tests
in Canada, this immunological tests? So, see, the reproductive immunology is practiced globally. In all the different countries, it is practiced. The investigations are also available in different countries. Yes, the type of investigations will be little different, or maybe more exhaustive list of investigations will be available abroad. So definitely they can get this test there in Canada, and we can always guide them or help them in getting which tests are required to be done, and they can accordingly do those tests in whichever country they are, in fact. And if the reports indicate, because the process of Imulit is, as I said, it's a one time 3 hour process, done only once for 3 hours. And after that, after a period of 4 weeks, then they can plan pregnancy, and the effect of Imulit treatment lasts for almost 18 months after that. So therefore, most of our patients who are out of Mumbai or even out of India, they have online consultation. They get the investigations done in their respective maybe country or even state, and they send us the reports. And if they require this Imulit treatment, then they come for the treatment at one of our centers, which are, apart from Mumbai, we are in Nagpur, Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi, and soon we are starting few more centers in India. So the immediate treatment will be accessible to them in India, and they have to come only once, and investigations can be done in your respective area. So, yes, treatment is available in Delhi, NCR. You can connect with us, and definitely I'll connect you directly with डॉक्टर राउत. आप बात कीजिए, आप समझिए क्या ट्रीटमेंट है, कैसे है. आई थिंक आपका ट्रांसफ़र नियरिंग है या आप ट्रांसफ़र पे जा चुके हैं, सो प्लीज़ डिले मत कीजिए. जस्ट लेट अस नो आफ्टर दिस सेशन एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एवरी पॉसिबल वे. तो सर आपके कैंप्स लगते रहते हैं अलग-अलग सिटीज़ में. सो वी हैव दिस क्वेरी फॉर दैट ओनली. You carry camps in various cities every month. Do you perform LIT treatments during these camps? Can you, in brief, explain what involves the LIT procedure? Because as you mentioned, 3 घंटे का procedure है, तो कैसे होगा, कब होगा? कामिनी देवी, आपका सवाल मतलब आई विल जस्ट वुड लाइक टू क्लैरिफाई. फर्स्ट थिंग is we have centers in different cities, okay, which I mentioned, and we conduct procedures. We don't conduct camps. We go and do actual procedures there for patients whom we have already given appointments. So we see these patients throughout the month, and those who require Imulit procedure, we give them the date of that particular city when we are going to be there, and we go and perform LIT procedures. Now, I told you this Imulit is a patented process, so the core part of this procedure is done by us only, me and Dr. Mrs. Rao, and entire procedure is done by us at all centers, because this is a very important procedure, and any deviation from the standard, or if it is not done in the right way, the results will suffer. And that is the reason why many of the patients who have told us that they have taken this treatment before and they have not succeeded, the reason is this. In fact, I would like to share with you that in our different centers, we get patients who have done this lymphocyte immunization therapy before, maybe 3 times or 2 times, and they have not succeeded. And we have investigated them again, we have given them treatment, and they have successful pregnancy after that. I remember one patient in Delhi who had taken 3 sittings of lymphocyte immunization therapy somewhere. She required actually Imulit treatment at our center. We gave in Delhi, and she conceived naturally. And now she is pregnant. Pregnancy is going on well. So therefore, it is very important to do the right investigations, and important for the patient to take the right treatment. So I think therefore all these cities we go and do the treatment ourselves. These are not camps. These are actual procedures which we do. For day or two we go and do all the procedures. And what is basically, you want to know what is done, is we collect blood from husband. The lymphocytes are separated by a special protocol which is patented in the laboratory, and these cells are then injected in wife. So this is what is involved in this procedure. And after 4 weeks, we ask them to plan pregnancy.
And I'm repeating again, the effect lasts for almost 18 months, so require only single sitting. सिंगल सिटी, राइट। एंड कैंप्स नहीं है, सेंटर्स हैं और सर और मैम खुद से ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। सो इफ यू आर इन एनी पर्टिकुलर सिटी एंड यू आर थिंकिंग दैट दे विल बी विजिटिंग इन नियर फ्यूचर, सो वेट मत कीजिए, अनाउंसमेंट होने का कब आ रहे हैं हमें बताइए, वील जस्ट अरेंज फॉर योर ऑनलाइन कंसल्टेशन, सो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सर एक सवाल मेरी तरफ से कि व्हाट इफ आई एम अंडरगोइंग डोनर साइकिल, डोनर एग साइकिल, डू आई रियली नीड LIT during donor cycle also if I have failures in the past? Right. So a couple who has failures, say IVF failures or miscarriages or infertility, and she requires IVF with a donor egg. And so in such cases also there can be immunological problem, because basically the immunological problem is in the wife or in the mother, because she is carrying the pregnancy, so the immunological protection is required in the mother's body. Then that pregnancy, whether it is with self gametes, with donor gametes, whichever way it is, if there is immunological problem, pregnancy will not grow. Second thing is, the treatment of Immulate involves use of lymphocytes. What is done in this is we produce protective antibodies which protect the pregnancy. So to induce these protective antibodies, we require lymphocytes which can be from any human being other than the patient. It is called as allogenic lymphocytes. So this is an immunological treatment. This is not a genetic treatment. Right. So even if there is husband's sperm and wife's egg, if we can use any other donor's lymphocytes to induce the protective antibodies if the husband can't give blood. And as you mentioned, Purnima, if any case, suppose donor egg is required, or say donor sperm is required, or donor embryo is required, still husband can give blood for his lymphocytes, and those lymphocytes will also have the same effect of producing protective antibodies and protective cells. So therefore, immediate treatment is given either by husband's blood or by donor's blood, and it is equally effective in both cases. Whichever is required in a particular case, it can be done. So therefore, a couple who has undergoing donor cycle, if the immunological test indicate alloimmune problem, and they will, if the investigations indicate that immune treatment will be beneficial, then even husband's lymphocytes will be useful. I think it is clear. Many times we doctors also Right. ask us this question: if there is donor, can we use still husband's lymphocytes? So this is the explanation for this. Right. So, I think we have many queries related to this only donor cycles and all. And process, we just, Dr. Raut mentioned over here कि process day care है, 3 घंटे लगते हैं. So, आपने जितनों ने भी इसके लिए पूछा है, so yes, okay. So Patricia, you can just send us a message after this session. I'll connect with you personally and will let you know how you need to go ahead with this treatment. Yes, donor cycle question also we have taken. Yes, I think we just covered it. Just let me check once more. Yes. So viewers, if you have any more queries, anything related to LIT treatment, तो आपको लगता है कि करवाऊं या ना करवाऊं, अगर आप उस एक थिन बॉर्डर लाइन पे भी खड़े हैं, देन ऑल्सो लेट अस नो, बिकॉज हम हेल्प करेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कि वेदर इट इज मेंट फॉर यू और नॉट. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज सेंटर डॉक्टर हर कोई चीज LIT करवाने के लिए प्लीज एक बार चेक कीजिए. प्लीज डू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ योर सेंटर, योर डॉक्टर, बिकॉज इस थेरेपी का अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है. आपका टाइम इन्वॉल्व है, आपका मनी इन्वॉल्व है, एंड अगेन आपकी प्रेगनेंसी आपके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो सर, बिफोर जस्ट एंडिंग दिस सेशन, any important pointer or any important tip for our viewers?
I would like to tell you one important thing. In any case of reproductive failure, that is either miscarriages, IVF failures, infertility, which is unexplained, always remember that there can be immunological cause. So it should not remain as the last resort that when everything has failed, patient has gone through the hardships of physical, mental problems, and then to think about immunological problems. So therefore, it is important for every doctor to think about this problem for their patients, and it is important even for patients to know more about this, to ask their doctor about this, and ask for more details and whether this particular treatment will be beneficial in their case. They should ask their doctors, or they can even contact us. So we will be able to tell you whether in a particular case immunological treatment of Imulit is going to be beneficial, and then take an informed decision without going through lot of trouble. Select the right place, right doctor, right center, and get benefited by from this excellent treatment which has helped so many couples so far at our different centers and even globally. So and I also I will thank Purnima and Fertility Those, because such interaction is really important, and I think a few uh, people could interact in this session today. There will be so many who must be waiting or who will know about it later on, and I think I would love to carry on this type of say a series on and on, so that more and more patients know about this and they fulfill their dream of having a baby, for which we are here with this special patented process of Imulit. So thank you viewers, thank you so much for joining today. सैटरडे हमने स्पेशली आपके लिए सिलेक्ट किया था, ऑफिस से छुट्टी है, घर बैठे हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ तो अच्छा देखिए. एंड अगेन थैंक यू डॉक्टर राउत फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं. इन वेबिनार्स के थ्रू वी आर ट्राइंग हार्ड टू गिव यू द राइट information. I know we have Google, but again, Google is not everything. We have good doctors. We should believe in their treatment, their procedures. If you are really thinking for LIT, I mean, if you still have few doubts in your mind, then also do let us know. हम यही प्रे करते हैं आपका ट्रीटमेंट, आपकी जर्नी बहुत अच्छे से निकले, आपकी गुड न्यूज़ हमारे थ्रू आए. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग टुडे. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much.